Charanji, Assalamu alaikum everyone. So time already. Assalamu alaikum everyone. I think we should start. So I think we have 6 people in the session. We can continue and the people will join later. I will accept their invitation and will admit them in the session. Just first of all, let me know is my voice is clear. Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? My voice is clear. Yes, yes, we can Thank hear you. you. Okay, thank you. So we will start now. So there are 6 modules of this training session, and 3 we will deliver today, and the remaining 3 will be covered on next Friday. The session will be concluded in 1 hour. It is the time we will conclude this session around 18:00 Pakistan Standard Time and 16:00 KSA time. So the first module is about introduction to hazard recognition. In second module, we will discuss about common workplace hazards. And third module, we will talk about hazard recognition techniques. So we will conclude in 3 modules, and the remaining 3 modules will be delivered in next session on next Friday. So in first module, we will talk about introduction to hazard recognition. So hazards are an inherent component of the workplace, whether we recognize them or not. So in hazards are intrinsic to workplace due to diverse activities and environment from office to construction sites. These latent risks can lead to accidents or health issues. अस्सलाम If वालेकुम। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आवाज बहुत मेरे स्लो है। मेरे पास एक मिनट है, मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ. Hazard I intrinsic to have tried to workplace. log in several times, but still आपकी आवाज बहुत low है। I cannot hear you very well. Okay, let me check the connection. My voice is clear now.
स्टिल आपकी आवाज थोड़ी कम है, बट नहीं, लेट्स सी। फिर आपके स्पीकर में प्रॉब्लम क्योंकि मैंने 2 डिवाइसेस से जॉइन किया पर मेरे पास आवाज़ क्लियर आ रही है, तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम ओके, प्लीज़ चेक करें। थैंक यू। ऑलराइट, लेट मी ट्राई। Okay, thank you. So we were on the first slide. So we were talking about the hazards are an intrinsic component of the workplace, whether we recognize them or not. So we recognize them or not, they are always there. So hazards are intrinsic to workplace due to diverse activities and environment. From offices to construction sites, these latent risks can lead to accidents or health issues if overlooked. Definitely, if we overlook them, the result will be in fatalities or injuries. Acknowledging their presence is pivotal for ensuring comprehensive safety measures in all work settings. So whatever the work setting in you are working in, you are in office, you are in a construction site, wherever you are, you should recognize them. You should identify the hazards so you can evaluate them and the other things. So hazard is what is hazard? So anything with the potential to cause harm. A hazard is anything that could cause harm or anything with the potential to cause harm. So a hazard encompasses anything that can potentially cause harm, such as chemical, machinery, or hazardous processes. It extends beyond physical object to include hazardous conditions like noise or inadequate lighting. Understanding hazard aids in implementing targeted precautions and interventions to mitigate risks effectively. The third point is about risk is a combination. What is risk? So risk is a combination of two things. It's like it's the combination of likelihood and the severity. So risk is a combination of two things: the chances that the hazard will cause harm and the how serious that harm could be. So risk entails assessing the likelihood of a hazard causing harm along with the potential severity of the consequences. By evaluating these factors, workplaces can prioritize their responses, focusing resources on high-risk areas to ensure effectively hazard management and prevent incident before they escalate. So people are in the lobby and I have to make okay. So the fourth point is about hazard recognition is the systematic task of identifying all सर hazards मैंने present. रिक्वेस्ट की है प्लीज अगर साथ उर्दू में भी साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी साथ कैंडी बिल्कुल ठीक है, फाइन। ट्रांसलेट मेरे कर ख्याल दें। से मेजोरिटी जो है वो हमारे पास उर्दू स्पीकिंग लोगों की ही है, सो मैं उसको उर्दू में भी बताता रहूँगा। फाइन, थैंक यू। तो हम शुरू से मैं इसको पहले स्लाइड कंप्लीट करते हैं, फिर मैं इसे उर्दू में इसका ओवरव्यू करता हूँ। ओके, हैज़ार्ड रिकग्निशन इज़ द सिस्टमैटिक टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑल हैज़र्ड्स प्रेजेंट और पोटेंशियली प्रेजेंट इन अ वर्कप्लेस। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रिकॉग्नाइज द हैज़र्ड इन द वर्कप्लेस टू मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी। So the people like Pakistani or Asians, for them, I will review the slide in Urdu. So others don't should keep patience till I move to second slide. So सबसे पहले hazard क्या है? Hazard कोई भी चीज़ जिससे किसी भी बंदे को खतरा हो सकता है, किसी के कोई नुकसान पहुँच सकता है, वो hazard है। उसकी एग्जांपल ऐसे कि अगर आप किसी भी रूम में भी अगर बैठे हुए हैं, जैसे मैं एक रूम में बैठा हूँ, वैसे तो यहाँ पे कोई hazard फील नहीं हो रहा, मगर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का कमरे में होना, जैसे बल्ब चल रहा है, एसी चल रहा है या लैपटॉप चार्ज हो रहा है, तो ये एक हैज़र्ड है। तो अब अगला चीज़ क्या है कि रिस्क क्या है? रिस्क क्या है कि इस इलेक्ट्रिसिटी जो प्रेज़ेंट है मेरे कमरे में, कितने चांसेज़ हैं कि ये इससे मुझे नुकसान पहुँचेगा और वो नुकसान की कॉन्सिक्वेंसेज़ यानी उसके नताइज कितने सीरियस हो सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो यहाँ पे लिखी है वो ये था कि देखें इसको एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू अगर आप असेस करेंगे, देखेंगे कि क्या-क्या खतरात हैं, तो फिर तो आपको कुछ समझ आ जाएगा। अगर आप मतलब बगैर किसी सिस्टमैटिक तरीके की कोशिश करेंगे कि जनाब यहाँ से पकड़ा इसको, तो उसमें चीज़ें ओवरलुक हो जाएँगी और चीज़ें अगर ओवरलुक हो जाएँगी, तो कोई ना कोई हैज़र्ड रह जाएगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज़ आपको कहीं न कहीं भुगतने पड़े दे विल हंट यू बैक, वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो आखिरी चीज़ है इन द फर्स्ट स्टेप टू रिकॉग्नाइज़ द हैज़र्ड इन वर्कप्लेस टू मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये पहला स्टेप है किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी को साइट पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको हैज़र्ड की आइडेंटिफिकेशन ही ज़रूरी है। तो अगर हैज़र्ड आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो हम उनको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, उनके सारे रिस्क कैसे निकालेंगे और किस तरीके से हम उनके कंट्रोल मेजर्स तक जा सकते हैं अगर हमारे हैज़र्ड ही मिसिंग है। तो दिस वाज़ द
overview of this slide in Urdu. So move to the next slide. So next slide, importance of hazards and recognition in workplace. So so the hazard existence and identification. First step is hazard. So first we will talk about hazard existence and identification. After hazard exists in every workplace, definitely not in every workplace, even everywhere, wherever you are, hazards exist there. The important thing is that these hazards are identified and mitigated in order to minimize the probability of an accident or injury occurring. Hazard identification is a process used to assess the potential of certain environment or activity or inflict harm on an individual. The second step, risk assessment. Once a risk assessment has conducted, a company will be able to determine techniques to either eliminate or mitigate the hazard identified. And the third point is frequency of hazard identification. Hazard identification should be carried out regularly, especially during the performance of new processes. अब मैं इसको उर्दू में आपके लिए बता देता हूँ कि देखें, वो कहता है कि देखें, आप जहाँ पर भी दुनिया में मौजूद हैं, खतरा वहाँ आपके साथ किसी ना किसी सूरत में मौजूद रहता है। तो बेहतर ये है कि आप कोशिश करें कि उसको ढूँढें, समझ लें, पकड़ लें, देख लें, काबू कर लें कि यार ये खतरा है। तो उसका उसके क्या खतरा, उसके मज़ीद कॉन्सिक्वेंस, जो उसके खतरे से मज़ीद जो नुकसानात हो सकते हैं या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, किसी को चोट लग सकती है, किसी की जान जा सकती है, कोई बीमार हो सकता है, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से देखें। उनको देखने के लिए ये ज़रूरत है कि आप रिस्क असेसमेंट करें। देखें, रिस्क असेसमेंट के अंदर आप क्या कर लेते हैं कि हैज़र्ड को ढूँढ लेते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ढूँढ लेते हैं, जिन बंदों को वो अफ़ेक्ट कर रहा है उनको ढूँढ लेते हैं। कितने परसेंट चांसेज़ हैं उसके, उसको आप क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली देख लेते हैं। और थर्ड, आप ये भी देख लेते हैं कि कितना सख्त सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, नुकसान कितना ज़्यादा हो सकता है, वो भी आप उसको असेस कर लेते हैं रिस्क असेसमेंट के अंदर। तो ये अगर आप रिस्क असेसमेंट आपकी अच्छी हो गई, तो समझ लें कि आपने 50% ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का काम कर लिया। और अगर आपकी रिस्क असेसमेंट में कहीं गैप रह गया, इट मीन्स कि आपका अगला आने बनने वाला सारा सिस्टम जो है वो फुल ऑफ फ्लॉज होगा, फ्लॉलेस नहीं हो सकता। इट्स लाइक इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। बात वहीं पर आ जाती है। अगर आप मनसूबा बंदी के अंदर नाकाम हो जाते हैं, तो आप नाकाम होने के लिए मनसूबा बंदी कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं करना। रिस्क असेसमेंट करते हुए आपको बहुत केयरफुल रहना है। आखिरी चीज़ तो ये कह रहे हैं, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन ऐसी नहीं है कि आपने क्या किया कि एक दफ़ा उसको देख लिया और बस बाकी सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। मतलब चेंज इज़ द सेकंड थिंग इन द यूनिवर्स दैट इज एग्जिस्ट, यानी कि अल्लाह की ज़ात के बाद जो दूसरी चीज़ दुनिया के अंदर सबसे कॉन्स्टेंटली हर वक्त हो रही है ना, वो चेंज है, तब्दीली है। तो जब चेंजेस होती हैं तो हैज़र्ड्स भी चेंज होते हैं, उनकी सेवेरिटी चेंज होती है, उनकी कॉन्सिक्वेंसेस चेंज होते हैं, मगर आपको उनको देखना है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि आपको रेगुलरली असेस करते रहना चाहिए कि क्या-क्या हो रहा है। तो दिस वाज़ द सेकंड स्लाइड। तो आपके लिए एक पोल है, अगर आप लोग डिवाइसेज़ के साथ आप लोग अपने-अपने डिवाइस पे आपने लॉगिन किया है, तो मैं एक पोल आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो आप उसका आंसर दें, हम उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला आपको अभी थोड़ी सेकंड में बता देंगे लोगों ने क्या आंसर किया उसका हमारे साथ। आप अपनी जो चैट है, वहाँ पर जाकर उसको आंसर दे सकते हैं। मैंने यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है, वो लॉन्च कर दिया है। जी, आपको जो है ना क्वेश्चन आपकी चैट बॉक्स में नज़र आ रहा है, आप सब इसका आंसर दे सकते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शन आपके लिए पढ़ देता हूँ कि व्हाट इज़ हैज़र्ड? अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म और अ डेंजर। सेकंड थिंग इज़ अ रूटीन टास्क दैट रिक्वायर केयरफुल अटेंशन, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉज़ डिसरप्शन, और द लास्ट ऑप्शन इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। इसमें से एक ठीक है, 4 में से एक चीज़ को आपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, आप कोई भी कर सकते हैं। मैंने अपना भी आंसर लगा दिया। जी, लोगों ने आंसर लगाने शुरू, कोई लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, मुझे बता दें एक दफ़ा, हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। सर लगा रहे हैं, लगा दिए। वेरी गुड, छा जाएँगे फिर तो आप सब लोग। चलें, खैर आप इसे आंसर लगा दीजिएगा, हम इसे अपनी को स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं। बल्कि इसके साथ एक और क्वेश्चन था अगली स्लाइड के लिए जो मैंने बनाया था, उसको भी मैं लॉन्च करता हूँ। वो है कि व्हाट वी कैन वेयर वी कैन फाइंड हैज़र्ड। इसका उर्दू में मैं ट्रांसलेशन बता दूँ कि हमें खतरा कहाँ मिल सकते हैं। तो ये मैंने वो भी लॉन्च कर दिया है, अब अपना आंसर उस पर भी लगा सकते हैं।
ताकि मैं अगली स्लाइड स्टार्ट करूंगा फिर। So the third slide, it is about the basics of safety. Safety basic concept. We will discuss about what is safety. Safety is a state in which hazards and conditions leading to physical, psychological, or material harm are controlled in order to preserve the health and well-being of individuals and the community. तो इस स्लाइड पर हमने बताया है कि सेफ्टी कुल मिला के क्या बला है। हमने बताया है कि सेफ्टी ऐसा एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी एक स्टेट है, ऐसी हालत है, ऐसा एक एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसे खतरात या कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई हालात जो हैं, जिसकी वज़ह से किसी को जानी तौर पर, उसके दिमागी तौर पर या किसी इक्विपमेंट को कोई नुकसान पहुँच सकता है, तो हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं ताकि जो लोग हैं या एनवायरनमेंट है या एसेट्स हैं, वो डैमेज ना हो। देखें, बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल हम 3 चीज़ों को सिक्योर कर रहे होते हैं, सेफ कर रहे होते हैं। फर्स्ट जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है, इंसानी जान है। First of all, we tried our level best to secure the human life. The second thing is environment. हमारा जो फोकस होता है वो एनवायरनमेंट पे होता है। इंसानी जान बच जाए, उसके बाद हमारा जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम जिंदा हैं, उसको डैमेजेस नहीं होने चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज एसेट्स, कंपनी के एसेट्स, कंपनीज एसेट्स। हमें तीनों चीजें बचानी होती हैं। इंसानी जान बचानी है, एनवायरनमेंट बचाना है और एसेट्स भी बचाने हैं। तीनों में से तीनों को सिक्योर करना, अगर आप एक वर्ड में कहें व्हाट इज़ सेफ्टी, तो सेफ्टी मीन्स कि किसी भी की जान, किसी कोई बीमार ना हो, किसी को चोट ना लगे, माहौल के अंदर हमारा एनवायरनमेंट डैमेज ना हो और कोई भी कंपनी का एसेट भी ज़ाया ना हो। लेकिन जब ट्रेन का कोई भी लिफ्टिंग एक्टिविटी हो रही होती है, इफ देयर इज़ अ एक्टिविटी ऑनगोइंग फॉर लिफ्टिंग एंड द क्रेन इज़ बीइंग यूज्ड देयर, तो इफ द क्रेन कोलैप्स देयर, so it damages everything. It damages the environment, it causes human life loss, and same time the assets. The crane itself damaged, and by falling the boom of the crane, the equipment, the surroundings, the walls, structures, or machinery, or plants, everything get damaged. तो मैंने ये बताया कि अगर हम क्रेन के साथ लिफ्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अगर वो क्रेन कोलैप्स कर जाती है, कोई वजह बन जाती है क्योंकि आपके लिफ्टिंग प्लान में कोई ऐसा मसला रह गया था या वेदर कंडीशंस इतनी जल्दी हार्श हो गई कि आप उसको असेस नहीं कर सके या कुछ और हुआ, कहीं न कहीं से गलती रही, तो उस कोलैप्स होने के तीनों चीज़ें खराब होती हैं। आपका इंसानी जान भी खतरे में जाती है क्योंकि क्रेन जब कोलैप्स होता है तो उसके स्लिंग्स ही इतने खतरनाक हो जाते हैं। वो क्रेन का बूम गिरना, क्रेन का खुद गिरना तो एक अलग बात है, वो जो उसके स्लिंग्स टूटते हैं ना, वो बिल्कुल किसी भी तलवार से काम नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा ही करते हैं। सेकंड थिंग, जब वो गिरती है तो मतलब उसके अंदर ऑयल होता है, किसी और चीज़ पे गिर सकती है, हो सकता है कोई केमिकल एक्सपोज़र, कोई सिलेंडर पड़ा हुआ हो वहाँ पे कोई केमिकल का कंटेनर पड़ा हुआ हो, उसके ऊपर गिरेगा स्लिंग या वो टूटेगा तो एनवायरनमेंट डैमेज होगा। और क्रेन इटसेल्फ एक एसेट है और अगर उसके गिरने से कोई मशीनरी, कोई प्लांट लगा हुआ डैमेज हो जाता है, तो वो भी एक खतरा होगा। सो मतलब सेफ्टी क्या है कि हमें तीनों चीज़ों को प्रिज़र्व करना है, तीनों चीज़ों को सिक्योर करना है कि हमारे ना ह्यूमन लाइफ़, ना हमारा एनवायरनमेंट, ना हमारा एसेट, तीनों चीज़ों को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। एक स्टेट है जिसके अंदर हम सब चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेफ्टी इज़ अ स्टेट इन व्हिच हैज़र्ड एंड कंडीशंस लीडिंग टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मटीरियल हार्म आर कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द हेल्थ एंड वेल-बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटी। On the next slide, we can see overview of legal requirements and regulations. So we have everyone on the call and in the session is a safety profession, in my opinion, and I think so. This is right. So we know there are three reasons to managing health and safety: moral reasons, legal reasons, and financial reasons. So here we will discuss first of legal reasons. So whatever you are doing in your organization according to the standard, if you are violating the law, so no, there will be no benefit of in implementing the health and safety management systems there. So first of all, you should abide the law. If you are complying with the law, then next step is good. If you are violating the laws, you are neglecting them, so there will be no benefits of implementing the ISO 45001 or OSHA's or any other management system. So overview of legal requirements and regulations. A principle of regulation governing action
procedure or device intended to lower the occurrence of risk of injury, loss and danger to person, property or the environment। ये वही बात है जो मैंने पहले आपको बताई है कि जो किसी भी रेगुलेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी प्रोसीजर बनाया जाता है, उसका मिशन यही है कि बंदा, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट किसी तरीके से बच जाए। द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आर दोज रिक्वायरमेंट्स दैट आर डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क रिडक्शन। जितनी भी एफर्ट चल रही है दुनिया के अंदर सेफ्टी के अंदर, सब उनका सबका ऑब्जेक्टिव तो ये कि रिस्क को कंट्रोल कर ली जाए, एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल तक लेके आ जाए। उसको जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल कर लें। लाइक एनी अदर रिक्वायरमेंट दे may at first be specified at a high level, for example simply as need for the reduction of given risks। मतलब वी कैन हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता कैसे, मतलब सारा कुछ इकट्ठा ही कहीं से गिर जाता है। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्की के अंदर एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके जाया जाता है, ताकि उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कॉमन सेफ्टी रूल्स में क्या है, फॉलो द ड्रेस कोड। देखिए, अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, आप किसी प्लांट पर काम कर रहे हैं, किसी मूविंग पार्ट्स के ऊपर जहाँ पर कवर्ड हैं या नहीं है स्टिल, तो देयर विल बी अ ड्रेस कोड। सो ड्रेस अकॉर्डिंग टू द वर्कप्लेस ड्रेस कोड। दिस में प्रोहिबिट ज्वेलरी और ओपन टो शूज। फॉर एग्जांपल, often a workplace may require employees to wear specific footwear and long sleeves and pants in order to protect against common workplace accidents। ये इसका मतलब ये है कि देखें, बहुत सारी वर्कप्लेस जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर एक कानून सा एक रेगुलेशन या एक प्रोटोकॉल बना दिया जाता है कि एनीबॉडी एंटरिंग द साइट मस्ट वियर अ सेफ्टी हेलमेट ऑन हिज हेड, अ स्टील टो सेफ्टी शूज एंड अ रिफ्लेक्टिव वेस्ट। तो ये एक बड़ा बेसिक सा प्रोटोकॉल है जो किसी भी कंस्ट्रक्शन या किसी भी वर्किंग साइट के लिए होता है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल देगी कि कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको ज्वेलरी पहनने से भी रोका गया हो कि आप ज्वेलरी नहीं पहन सकते, या आपके लेसेस खुले हुए नहीं हो सकते, या आपके जो स्लीव्स हैं वो कम नहीं हो सकते। ताकि और ऑल बिकॉज़ वी वांट यू टू बी सेफ इन द वर्क एनवायरनमेंट। सो द सेकंड पॉइंट इज़ लर्न हाउ टू एक्ट इन एन इमरजेंसी। तो जो अगला पॉइंट है वो ये है कि किसी भी इमरजेंसी में, देखिए पहले तो हम प्रिवेंशन पे रहते हैं कि कोई इमरजेंसी क्रिएट ही ना हो। बट इन केस ऐसा हो जाता है किसी ना किसी जगह पर इमरजेंसी हो जाए, देन व्हाट? फिर कैसे रिस्पॉन्ड करना है? लर्न इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग where to go in case of a fire or during a natural disaster such as tornado. Much like work procedures, companies design emergency protocols with strong consideration for safety regulations. Knowing where to go or how to behave during an emergency protects you as well as your coworkers। देखिए, अगर मतलब कुछ गलत हो गया है, तो अगर आपको प्रोटोकॉल्स पता है और आपको पता है कि अब क्या करना है, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, खुद जाना है, साथ वालों को लेके जाना है, या हेल्प के लिए कॉल किसे करनी है, सायरन कहाँ से बजता है, अगर कोई मतलब कुछ लोग पीपल विद स्पेशल नीड्स वहाँ पर हैं जिनको सुनता नहीं है या जो मूव नहीं कर सकते खुद से, उनको कैसे निकालना है। तो ये सब कुछ उस प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि अगर आपको पता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड इन एन इमरजेंसी, अगर आपको ये प्रोटोकॉल बताया गया एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, तो आप खुद को भी बचा लेंगे और अपने साथियों को भी बचा लेंगे। द थर्ड पॉइंट इज अबाउट मेंटेन पर्सनल हाइजीन। Maintaining your personal hygiene such as cleanliness to help prevent illness at work. Good hygiene can also help promote health and self-esteem which reduce risks। देखिए, एक एनवायरमेंट अपना जो वर्क प्लेस है, एक तो खुद को साफ रखें और दूसरा एनवायरनमेंट को, जो वहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं उस जगह का भी ख्याल करें। इसमें लाइक हाउसकीपिंग की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ डब्बा रखा, यहाँ कील रखे, यहाँ पे हथौड़ी रखी, यहाँ से आगे चले गए, वहाँ कुछ और छोड़ के वहाँ से आगे चले गए। बखेरा नहीं डालना है, ठीक है? मेक योर वर्कप्लेस क्लीन एंड टाइडी। और चौथा पॉइंट है मेंटेन अ क्लीन वर्क स्पेस। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप योर डेस्क और अदर पर्सनल वर्क स्पेस क्लीन। ऐसा नहीं सिर्फ हम साइड की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी डेस्क पे भी बैठते हैं या किसी घर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप उसको मेंटेन करें। बी श्योर टू पुट अवे सप्लाइज व्हेन दे आर नॉट इन यूज। देखें, आपने जो चीज़ इस्तेमाल कर ली है, अब वो फ्री हो गई है, तो बजाय इसके कि वो वहाँ पड़ी रहे और आप आगे किसी और चीज़ में उलझ के उसको छोड़ के वहाँ भूल जाएँ। घरों में ऐसे ही होता है, टेबल के ऊपर पानी का गिलास रख के आधा पी के आधा छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको उठाते नहीं है, फिर बाद में वो गिरता है, बेड पे गिरता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उसे यूज़ करने के बाद छोड़ दिया। इसी तरह वर्क प्लेस पे के ऊपर भी होता है कि आपको 4 कील चाहिए थे, आप 10 ले गए,
4 इस्तेमाल किए, 6 वहाँ छोड़ दिए। वो किसी के शूज़ के अंदर से उसके अंदर घुस गए, किसी का पाँव डैमेज कर दिया, किसी गाड़ी का व्हील पंक्चर कर दिया, तो ये इश्यूज़ होते हैं। They are not in use. Gathering necessary materials before starting a task can help keep a clean workplace. देखें, अगर तो आपने चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो आपने शुरू होने से पहले इकट्ठी कर ली हैं, तो ये चीज़ें बेहतर रहेंगी, अदरवाइज़ कोई ना कोई मुसीबत आपका वेट कर रही होगी। तो मेरे ख्याल से कोई बंदा सेशन जॉइन करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको इन कर लूँ 1 मिनट, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ फॉर 30 सेकंड्स। ओह! कौन है? So the next slide, on the next slide, we can see stay in your work zone. So while working, try to stay in your designated work area. This allow you to be familiar with your surroundings and increase the likelihood that you understand the rules of conduct in the area. तो ये बड़ा सिंपल सी बात उसने कही है कि ऐसा नहीं है कि आप वर्क स्टेशन के ऊपर जो है ना वहाँ पर पिकनिक मनाने नहीं गए हुए होते हैं। आपको जिस एरिया में काम डेजिग्नेटेडली मिला है, उसी एरिया में काम के टाइम तक रुकें। क्योंकि उसको अच्छी तरीके से जाँच लें, आपको पता होगा कहाँ पर क्या कैसे है। अब अगर घूमते-फिरते रहेंगे तो आप लाज़मी बात है किसी ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ से आप वाकिफ़ नहीं हो, और अगर आप वहाँ पहुँचते हैं तो हो सकता है किसी एक्सीवेशन के अंदर, किसी पिट के अंदर, किसी पॉट होल के अंदर, किसी मशीनरी के अंदर आप स्टक हो जाएँ। तो जो शुड यू शुड बी यहाँ पर आपसे ये कहा गया, यू स्टे इन योर डेजिग्नेटेड वर्क एरिया। द नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉलो सेफ्टी गाइड्स। Follow all safety guides put in place to protect you and your coworkers. Companies design safety rules to prevent incidents. Sometimes rules results from a previous accidents, which is why it is important to report your injuries as well as unsafe conditions. देखें, जो चीज़ बताई गई है उस पे आप अगर अमल करेंगे तो ये सब आप ही के फ़ायदे में जाने वाला है। अगर आप उस पे अमल नहीं करेंगे, तो डेफ़िनिटली देयर विल बी प्रॉब्लम्स फॉर यू एंड द अदर्स एज़ वेल। तो यहाँ पर यही बताया गया है आपसे आपको कि देखें, खुद एक तो जो आपको बताया गया इंडक्शन के दौरान रोज़ टीबीटी होती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसके दौरान सेफ्टी विज़िट के दौरान अगर कोई एचएससी का बंदा वहाँ पर विज़िट कर रहा है, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है? वो आप ही के लिए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वहाँ पर आप कुछ गलत देखते हैं तो ऐसा नहीं कि उसे इग्नोर कर दें कि मेरा काम नहीं है। नो, नो, रिपोर्टिंग नियर मिसेस, हैज़ार्डस कंडीशंस, it is your sole responsibility. It is responsibility for everyone, not only for HSC persons. Everyone involved in any project, in any activity, he is solely responsible to report anything he see on sites that there is some unsafe conditions or someone is doing unsafe acts. So these things should be reported. And the next point is use caution signs. Use caution signs when applicable. For example, wet floor sign prevents slips on a floor after you mop or after a spill. Areas at work may require barriers or signs when equipment such as forklift are in use. So in this part, we discuss about the signage चैलेंजिंग पॉइंट, यानी कि हमने देखा कि अगर आपने कोई एक्सीबिशन खड्डा खोल दिया है, तो अब किसी को तो नहीं पता कि आपने अब पिछले आधे घंटे के बाद जब वो गुज़रा था वहाँ पे सही था, आपने आधे घंटे में एक्सीवेटर का इस्तेमाल करके वहाँ पे खड्डा खोल दिया, तो यू शुड बैरिकेड द एरिया। देयर शुड बी अ वार्निंग टेप, देयर शुड बी अ प्रॉपर साइनेजेस अवेलेबल, देयर शुड बी अ प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम अवेलेबल to make it visible to everyone coming there that there is some excavation area ahead। ऐसा नहीं है कि उस बेचारे को पता नहीं लगा कि आपने 8 फुट गहरा खड्डा खोल दिया और नीचे सरिया भी डाल दिया और शायद प्री का वहाँ पीछे बना पड़ा हुआ था, तो किसी की जान खतरे में है। तो प्रॉपर साइनेजेस शुड बी यूज्ड इन एनी एरिया, एनी स्पेसिफिक एरिया फॉर एनी स्पेसिफिक एक्टिविटी, लाइक इफ यू आर यूजिंग फोर्कलिफ्ट ट्रक। और आपका अगर इवन का ऑफिस की बात भी यहाँ पर की गई, अगर आपके ऑफिस में सफाई हो रही है तो वहाँ वेट फ्लोर का साइन पड़ा होना आपको कॉशन देता है कि भाई फर्श गीला है, कुछ मसला बन सकता है। तो ये चीज़ है। अगली बात करते हैं कि तो हम मॉड्यूल 2 पर आ गए हैं। मॉड्यूल 1 कंप्लीट हुआ। द फर्स्ट मॉड्यूल हैज़ बीन कंप्लीटेड। वी आर अबाउट टू स्टार्ट द सेकंड मॉड्यूल। इन दिस मॉड्यूल वी विल बी डिस्कसिंग कॉमन वर्कप्लेस हैज़ार्ड्स and first of all, we will discuss about physical hazards. Then we will discuss chemical hazards, biological hazards, ergonomic hazards, and psychological hazards. So, if we would, I would like to give you an overview of what is physical hazard. These hazards encompasses danger like slips, trips, falls, and potential harm far from machinery and equipment. They often arise from unsafe conditions and inadequate safety measures. Threatening implies well-being and workplace productivity। तो फिजिकल हैजर्ड क्या है? कोई भी चीज जो आपको जिस्मानी तौर पर
आप गिर सकते हैं, आप स्लिप हो सकते हैं, किसी मशीनरी का वो घूम रही थी, रिवॉल्व हो रही थी, उसके साथ आप टकरा जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये फिजिकल हैज़र्ड्स के अंदर आती हैं। अगर हम केमिकल इफ वी टॉक अबाउट केमिकल हैज़र्ड्स, so chemical hazards involve risk associated with hazardous substances and toxic materials. Employees working with or near these materials face potential health risk due to exposure. Proper handling, storage, and protective equipment are vital to prevent the harm. तो देखें आपको बताया गया कि केमिकल हैज़र्ड क्या बला है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे हमको एसिडिक एसिड कोई एसिड्स हैं, इवन के जो पेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जो चूना जो हम साइड पे यूज़ करते हैं, बड़ी नॉर्मल चीज़ है। इवन द सीमेंट कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ हो रहा होता है, उसमें एडमिक्सचर यूज़ हो रहे होते हैं। ये सब सब्सटेंसेस जो है ना वो इंसान के साथ फ्रेंडली नहीं है। ये आपकी स्किन के साथ अगर टच करते हैं तो उसको इरिटेट करेंगे, अगर आप इसे इन्हेल करते हैं तो आपके लंग्स का बेड़ा गर्क करेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पे और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर वो कुछ और हैज़र्ड्स में आएँगी। अब इन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बायोलॉजिकल हैज़र्ड। So the biological hazards relate to infectious agents, allergens, and other biological materials that can jeopardize health of workers exposed to these hazards, especially in healthcare setting. Need effective protocols to prevent the spread of disease and protect both themselves and patients. So biological hazard क्या है कि देखें वो hazard जो आपको खून की शामिल होकर आपके लिए मसला बना सकता है या आपकी सांस से इनहेल होकर आपके अंदर जाके आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है या आपके खाने के साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होकर वहाँ आपके साथ नुकसान उसको पहुंचा सकता है। तो ये सब चीजें बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के अंदर आएंगी। And the next point is ergonomics hazards. So ergonomic, what is ergonomic? A relationship between person, equipment, and the environment is called in ergonomics. यानी कि if a person is working on a computer, so the temperature of the room, the sitting, the chair he is sitting on, and a computer, and the relation between all these things are called ergonomics. Ergonomics क्या है कि जिस environment में आप काम कर रहे हैं और जिस इक्विपमेंट पे आप काम कर रहे हैं और आपका जो पोस्चर है, तो ये सब चीज़ के अंदर जो रिलेशन है, वो ergonomics कहलाता है। द लास्ट थिंग इज़ अबाउट साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स। Psychological hazards pertain to mental and emotional well-being. They encompasses issues like workplace violence, stress, harassments, and burnouts. देखिए मैं साइकोलॉजिकली भी सिर्फ हैजर्ड्स वैसे नहीं कि इंसान स्लीप पे होता है तो उसको चोट लगती है और बहुत सारी परेशानियां साइड पर होती हैं जैसे एक वर्क प्रेशर आ जाता है, कोई निकम्मा मैनेजर आपके मत्थे लग गया जो हर वक्त आपकी जान लेने की जगह बैठा हुआ रहता है, तो ये सब चीजें भी एक हैजर्ड ही हैं। इस स्ट्रेस के साथ इस चीजों के साथ लोगों की जान जाती है, लोग सुसाइड कर जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना ज़रूरी है। On the next slide we can see the common workplace hazards के अंदर हम now we will discuss the physical hazards. Physical hazards can affect those who work in extreme weather conditions or in harmful environments. Some of the most common cause of slip, trip, and falls are the spills, clutters of walkways, uneven surfaces, poor lighting, weak or damaged ladders, or improper use of or not using fall protection equipment. तो इसमें जो पैराग्राफ इंग्लिश में मैंने पढ़ा इसमें बताया गया कि फिजिकल हैजर्ड जो हैं वो इंसान को वेदर कंडीशंस की वजह से भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये इसलिए होते हैं कि वहाँ पर जो है वॉकवेज क्लियर नहीं होती, चलने का जो रास्ता है उसमें कोई ना कोई चीज़ें पाइल अप कर दी जाती हैं। वहाँ पे सरफेस जो है उसे इक्वल नहीं इवन नहीं किया जाता, उसमें खड्डे होते हैं, उस वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम नहीं होता। तो इन चीज़ों की वजह से फिजिकल हैजर्ड्स वहाँ पर होते हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। व्हाट आर द केमिकल हैजर्ड्स? Chemical hazards mainly threaten employees whose roles expose them to dangerous liquids, solvents, or flammable gases. Individuals who are most likely to be affected are those working in cleaning facilities, engineering, and employees in field-based roles. Exposure to harmful chemicals can cause illness, skin irritation, breathing problems, and extreme case death. Yes, ऐसा हो सकता है। अगर आप केमिकल एक्सपोजर आपका हो जाता है किसी गलत तरीके से हाथ, तो फिर जो है आपको उसके साथ जो आपको हो जाता है तो उसके साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। यानी आपको इरिटेशन हो सकती है, आपको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो लोग केमिकल्स को हैंडल कर रहे हैं, इवन जो लोग सीमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे जो लेबर के लोग हैं, द पर्सन डीलिंग विद द सीमेंट्स, इफ दे आर नॉट यूजिंग ग्लव्स, नॉट यूजिंग गॉगल्स, नॉट यूजिंग फेस मास्क्स, सो दे आर डैमेजिंग देयर सेल्व्स। In the young age, they will not feel they will not feel the problem, but in when they will be above 450 or 55, then they will be able to see their hands, there will be cuts. यानी कि जो लोग अभी सीमेंट को यूज कर रहे हैं उनको ग्लव्स यूज करने चाहिए, उनको फेस मास्क यूज करने चाहिए, उनको गॉगल्स यूज करने चाहिए। जो सीमेंट आज उनके हाथ को लग रहा है, उनको लग रहा है कुछ नहीं होता,
वो जब वो 50 साल के होंगे तब वो उनको बताएगा कि बहुत कुछ होता है। तब वो हाथ के ऊपर के पोर जो हैं वो कट जाएँगे, उसमें से खून निकल रहा होगा हर वक़्त, वो किसी चीज़ को पकड़ने की डेक्स्टेरिटी खत्म हो जाएगी, उसमें से ताकत नहीं होगी, सुन्न हो जाएँगे और फिर वो कह रहे होंगे यार कुछ नहीं किया। वो ये तो उनको याद ही नहीं होगा कि वो जब जवानी में थे तब उन्होंने क्या कुछ घोला हुआ है। तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द केमिकल्स, you should be very mindful there. And in next slide, we can see the detail of biological hazard and ergonomic hazards. Biological hazards are extreme dangerous. Definitely, they are dangerous. These include exposure to dangerous substances and disease associated with the working amongst animal, people, or infections, plant materials. Employees who work in hospital, laboratories, or various other outdoor occupations are at risk from biological hazard. तो जो बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर तो उसकी एक ही को वजह बन सकती है, अगर कोई पंक्चरिंग हो जाती है, बंदे को कोई ऐसी चीज़ लगती है जो उसकी बॉडी के ऊपर की सरफेस को फाड़ के उसको छील के अंदर चली जाती है, तो फिर कुछ केमिकल्स उसके अंदर जा सकते हैं। ज़्यादातर इसके जो शिकार हैं वो हमारे हेल्थ जो इंडस्ट्री है वहाँ के लोग होते हैं। सर्जरी के दौरान जो टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं, अगर उनसे किसी डॉक्टर को खुद पंक्चरिंग हो जाए, कोई हाथ पे लग जाए कट हल्का सा, क्योंकि वो बहुत शार्प होते हैं, नीडल्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो वो ज़्यादा खतरे में रहते हैं। If we talk about the ergonomic hazards, the ergonomic hazards affects individuals whose work puts a strain on their body. Manual roles that require lifting or sitting for long periods can cause damage over time. These hazards may not be noticeable at first, which make them much harder to identify. लाइक ये वही बात है जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जो आदमी मुशक्कत कर रहा है या कंप्यूटर के सामने 10 घंटे बैठा हुआ है, उसको हो सकता है इनिशियली पता ना चले कि कुछ हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, मगर बाद में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो आपको पहली स्टेज पे अपनी केयर करनी है। यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू शुड बी वेरी माइंडफुल अबाउट दिस थिंग्स एंड यू शुड केयर योरसेल्फ एंड केयर अबाउट द पीपल अराउंड योरसेल्फ। So the last the type of hazard is the psychological hazard, workplace violence, stress, etc. So workplace bullying, aggression, harassment, and gendered violence, discriminations, or other unreasonable behavior by colleagues, supervisors, or clients. Poor relationship between employees and their managers, supervisors, colleagues, and client or other the employees has to interact with. सो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो सब डेजिग्नेशन बताएंगे योर मैनेजर्स, योर कोलीग्स, योर कस्टमर्स, if they are dealing with you in a fair manner, there will be no stress on your mind. But if there is a continuous pressure and needless pressure is there all the times, so it will deal some other, it will cause some other problem, like there will be violence, there will be stress, there will be depression. So we should be able to tackle these things. यानी कि हमें इन जो तमाम चीज़ें इनको बैलेंस में देखना चाहिए। सिर्फ़ जॉब में अगर आप पैसे देके किसी ऐसे एनवायरनमेंट में घुस जाते हैं जो हर वक़्त आपके सर पर मौत की तरह लटखड़ा ही रहा होता है कि यार पता नहीं अभी क्या होगा, अभी क्या होगा? तो वो पैसे तो आपको कुछ मिल रहे होंगे, आप सारी ज़िंदगी शायद गुज़र रही होगी, मगर वो आपको अंदर-अंदर से खा जाएगी। और देयर विल बी अ पॉइंट, देयर विल बी अ स्टेज कि जब आप शायद ये सोचेंगे कि मुझे अब ज़िंदा ही नहीं रहना, और ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी मैं नोकिया में जॉब करता हूँ, हमारे जो मियाँ के ऑपरेशन हेड थे, वो एक मीटिंग में बैठे हुए थे और उसके थोड़ी देर बाद उनको कोई मसला बना और वो 4 घंटे के अंदर-अंदर दुनिया से चले गए हैं। इतना स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है कि हमें जान दे के प्रूव करना पड़ता है कि देयर इज़ अ स्ट्रेस and stress can kill us. So be careful about these things as well. So we have gone through the module 2. Now this is the time we are about to start the module 3. It is about hazard recognition techniques. So first technique is observation skills and hazard identification. Second is task-based risk assessment. In third point, we will discuss safety inspections and audits. On fourth point, we will talk about incident investigation and near miss reportings. And the last point we will be talking about will be the use of checklist and other tools for hazards recognitions. So it's time for a poll question. I am launching a small question for you. So I hope you will answer. And I am launching that question. So first question I am launching, what should be the frequency of hazard identification? You should answer it. And the second question is about what is safety? So I think everybody knows what is safety. People will answer. And the third question is about identify physical hazards.
So I have launched 3 questions, and it is requested to you all, please answer these questions. And you can see these questions in your chat box. So only one person responded. I have people are reluctant in answering the questions. Anyhow, so we are starting the third module. It is the last module we will be covering today. So we have 10 minutes to come and go through in it. So the first point is about observation skills and hazard identification. Many hazard identification techniques rely on observation by assessors and are dependent on the experience and knowledge of the assessor. And the analyst should observe the work being done, including the work being carried out by the groups of operators looking for actual and potential hazards by observing and questioning less obvious invisible hazards such as health danger for fumes from fumes, gases, noise, lighting, and dangerous substances. Behavioral aspects like rules and precautions for controlling any hazard or risk should be supplied by the operator. तो पहले जो इस स्लाइड में हमने कहा वो ये कहा कि इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो ये डिपेंड करती हैं इन जो असेसर है, जो बंदा रिस्क असेसमेंट कर रहा है, जो हैज़र्ड आइडेंटिफाई करने जा रहा है, उसकी कॉम्पिटेंस पे। तो कॉम्पिटेंस के ऊपर हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, पर इस आज के सेशन में भी नहीं किया कि कॉम्पिटेंस क्या है। कॉम्पिटेंस के लिए आपको याद करना पड़ेगा एक वर्ड केट, KATE, के फॉर नॉलेज, ए फॉर एबिलिटी, टी फॉर ट्रेनिंग एंड ई फॉर एक्सपीरियंस। तो द पर्सन हैविंग अ रेलेवेंट नॉलेज, रेलेवेंट एबिलिटी, experience and training can be called a competent person. तो जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर उस बंदे की कॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। तो उसको वो अब देखता है कि अगर वर्क प्लेस को जाता है, उसे असेस करता है, लोगों से क्वेश्चंस करता है, वो चीज़ें जो लोगों को नज़र नहीं आ रही, फ्यूम्स होते हैं, गैसेज़ हैं, अगर वहाँ पर कोई डस्ट है, तो वो उन चीज़ों को भी देखता है जो ज़्यादा विज़िबल नहीं होती। वो लोगों का बिहेवियर एस्पेक्ट भी देखता है कि वो सेफ्टी को कैसे मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सब कुछ उस पर डिपेंडेंट होता है कि बंदा जो आपने ऑन बोर्ड किया है, ही शुड बी कॉम्पिटेंट एनफ। The second point is about task-based risk assessment. Task analysis is used to analyze all aspects of a task, including safety. Often with the intention of improving efficiency, a job can also be analyzed with an emphasis on safety or hazard. And the assessor divides the task into a number of steps, considering each step separately. The result of these analyses can be used to correct existing problems and to improve, among other things. Safe working methods, working instructions, worker protection, safety rules, emergency procedures, and serviceability of machinery and plants. Reports of hazards and provision of information, and the last thing is the layout of work area. तो यहाँ पर हमने बताया कि जब टास्क बेस्ड रिस्क असेसमेंट होती है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि बस ये सोच लिया जाता है कि एक फाउंडेशन बनानी है। उसके अंदर जो स्टेप्स फॉलो होंगे उनके ऊपर भी देखा जाता है कि सबसे पहले हैवी मशीनरी एंगेज होगी। मशीनरी के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो किसी के साथ हिट हो सकती है, किसी को क्रश कर सकती है, बंदे की कॉम्पिटेंस ऑपरेटर की चेक होगी। उसके बाद हम खड़े एक्सीवेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि अंडरग्राउंड सर्विसेज तो नहीं है। तो मतलब वो हाँ, पूरी जॉब को स्मॉल स्टेप्स के अंदर ब्रेक करता है। ही ब्रेक्स द jobs in small steps to analyze each and every step and identify the hazard associated in each step. तो वहां पर उसको समझ आ जाता है कि हर स्टेप पे क्या इश्यूज हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है। तो ये होता है पहला असेसमेंट टास्क बेस के ऊपर। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स. Safety inspections look for risky behavior and hazard that might lead to accident. Safety audits look at programs and processes to ensure they meet accompanied safety goals. मैं इसको थोड़ा सादा करता हूँ. Safety inspection is about assessing the task, assessing the people on site, and the audit is about to check the management system, the documentation, the evidences. सेफ्टी इंस्पेक्शन का मतलब है आप लोगों को देख रहे हैं कि वो साइड पे क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या कोई काम गलत ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे एक्सीडेंट हो सकता है। एंड द ऑडिट इज अबाउट चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स, कि आप ऑफिस में जाके उनके एसओपीज, उनके प्रोसीजर्स, उनके रिकॉर्ड कीपिंग्स चेक करने जाते हैं, दैट विल बी नोन एज एन ऑडिट।
As a general rule, inspections are about people, places, and things. Audits are about operations, processes, and programs. You can audit your safety inspection program, but you cannot inspect your safety audit. Yes. कहते हैं जी आप अपने सेफ्टी प्रोग्राम का ऑडिट तो करवा सकते हैं मगर अपने ऑडिट की सेफ्टी इंस्पेक्शन नहीं कर सकते. OSHA does not request safety audit report before conducting an inspection. They said OSHA may request audits as part of an ongoing review. OSHA looks at OSHA चीजों पे देखता है वो क्या है. Has the employer taken appropriate steps to prevent a reoccurrence? देखें अगर कुछ गलत हो गया तो ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि वो उन चीज़ों को रिकॉर्ड करे एंड ही शुड टेक द स्टेप्स टू अवॉइड द रिकरेंस. तो वो शायद देखता है कि क्या उसने वो स्टेप लिए. Has if a permanent solution is not in place, has the employer provide interim employees protection? कि देखें अगर कोई परमानेंट सोल्यूशन मिला नहीं है वो नहीं लगा सके तो क्या इंटरम को वक्ती तौर पे कोई काम किया ऐसा किया गया है जिससे निज़ाम चल जाए. If the above is true, OSHA will treat OSHA will treat audit as evidence of good faith and will not issue a citations. तो देखें अगर ओशा को लगता है कि आप काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और आपको जो एक्शंस देने से स्टेप्स लेने आपने लिए हैं तो वो आपको कोई जुर्माना शुर्माना नहीं करेंगे. On this slide, we will discuss the incident investigation and near miss reportings. So these represent reactive, but nonetheless a useful data report can arise from external notification requirements under national legislations discussed in element 3 or from internal reporting of all loss and near miss events. लेकिन कहते हैं जनाब वैसे तो ये रिएक्टिव है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो कुछ भी गलत हो जाने के बाद ही हो रही होती हैं. बट स्टिल ये दिस इज अ यूजफुल डाटा हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. सर्टेन एक्सीडेंट्स एंड ऑक्यूपेशनल इल हेल्थ एक्सीडेंट्स मे बी रिपोर्टेड टू एंड एनालाइज्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटर्स और एनफोर्समेंट एजेंसीज. पाकिस्तान के अंदर भी लॉ मौजूद है कि अगर कोई फैटेलिटी हो जाती है या कोई ऐसा मसला बनता है उसे रिपोर्ट करें. बट द प्रॉब्लम इज के था यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है. यहाँ पर जो वो अथॉरिटी है वो पंजाब पुलिस को असाइन की गई है पंजाब में. तो वो किसी को चोट लगी तो पंजाब पुलिस के पास थोड़ी जाएगा. Anyhow, each company should maintain its own records, not just of notifiable accidents and ill health, but of all accidents they have taken place. In this way, any trend or particular area that show significant changes can be investigated at the earliest opportunity. The reports will also be useful tool when carrying out risk assessment. तो यहाँ पे बताया गया कि देखें सिर्फ वही नहीं है जो मतलब आपने गवर्नमेंट को आपने रिपोर्ट करने थे वही रिकॉर्ड करें. नहीं आपको तमाम एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड करने चाहिए ताकि आपको समझ आ रहा हो कि आपके इस वर्क प्लेस पे आपके ऑफिस में आपके प्लांट पे चल क्या रहा है. यूज ऑफ चेकलिस्ट एंड अदर टूल्स फॉर हैजर्ड रिकॉग्निशन. To ensure a consistent and comprehensive approach to checklist, checking all the safety elements to be covered during an inspection, a checklist or inspection form is usually developed and that covers the key issues. Checklist should be also be structured to provide a coherent approach to the inspection process. देखें जब भी आप सेफ्टी के ऊपर चीज़ चेक करना चाहते हैं तो आप अपने माइंड पे 100% रिलाई नहीं कर सकते. ह्यूमन माइंड जो होता है उसका फोकस इतना वसी नहीं है कि वो हर चीज़ को कवर कर ले बगैर किसी एड के बगैर किसी सहारे के. तो हम इसलिए इंस्पेक्शन के दौरान चेकलिस्ट का सहारा लेते हैं ताकि हम हर पॉइंट जो है उसको चेक कर सकें. This help in monitoring of the inspection process and analysis of the results, as well as simplifying the task of carrying out the inspection itself. Checklists do have some limitations in that although prompt the assessor when looking for hazards, any hazards not identified in the list likely to be noticed. नहीं कि सिर्फ फायदा नहीं है चेकलिस्ट का कभी कभी नुकसान भी हो जाता है क्योंकि जो असेसर होता है वो इतना उस पर हो जाता है ना रिलाई कर लेता है चेकलिस्ट के ऊपर कि वो देखता है बस जो पॉइंट लिखे हैं वही चेक करने हैं. जो पॉइंट चेकलिस्ट पे मिस हो जाता है उसको वो देखता नहीं वो ओवरलुक हो जाता है. One helpful method of structuring a checklist is using a 4Ps as prompted by the UK Health and Safety Executives. तो ये HSC ने कहा कि अगर आप कोई चेकलिस्ट बना रहे हैं तो आप ये 4Ps को यूज कर सकते हैं. यूज ऑफ चेकलिस्ट एंड अदर टूल्स फॉर हैजर्ड रिकॉग्निशन. तो वो 4Ps का जिक्र आ गया कि 4Ps में प्रिमिसेस है, प्लांट्स एंड सब्सटेंसेस है, प्रोसीजर्स है एंड पीपल है. तो प्रिमिसेस के अंदर आपका आता है कि द थिंग्स इंक्लूडिंग इन प्रिमिसेस आर कॉल्ड आर एक्सेस और एस्केप रूट्स, हाउसकीपिंग, वर्किंग एनवायरनमेंट्स. If we talk about the plant and substances, it include machinery, guarding, local exhaust ventilation system,
storage, separation of material, chemicals. If we talk about the procedures, so this include permit to work, use of personal protective equipment, procedure follows or not. So, and if we talk about the people, it includes the health surveillance and people behavior. So we, as per OSHA, we should work on these 4 P's to make sure that we are checking each and everything, and nothing is overlooked in the process. So time is up. It's 6 o'clock here in Pakistan, and we have completed the 3 modules. And the remaining three, fourth, fifth, and sixth module will be delivered on next Friday, inshallah. एंड यानी कि मैंने अभी ये बताया कि हमने 3 मॉड्यूल कवर किए हैं। 3 मॉड्यूल्स के अंदर जो है हमने जो कुछ भी था उसको इंग्लिश उर्दू में जैसे हमसे पॉसिबल हुआ हमने उसे डिलीवर किया। हमने पढ़ा कि हैजर्ड रिकग्निशन क्या होती है और आमतौर पर जो वर्क प्लेस है वहाँ पर क्या हैजर्ड्स पाए जाते हैं और उनको कैसे रिकग्नाइज किया जाता है, क्या टेक्निक्स हैं, उन पर हमने बात की है। अगले जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे रिस्क असेसमेंट के ऊपर, हैजर्ड कम्युनिकेशन के ऊपर और सेफ्टी कल्चर के ऊपर। तो आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आप कोई अगर क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझसे कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल। Yes. Also you can ask what your hand is here. You raise your hand. I want to understand a bit of using a checklist for hazard recognition. When you have a checklist that has a space for comments, I believe you can use that comment section to add any hazard that wasn't listed in the squared checklist. Please come. There is a noise behind you. I cannot understand your question. Please repeat. What I'm saying is that I didn't clearly understand what you were saying about using a checklist for hazard recognition. Some of the checklists we use for hazard recognition in our side has place that you can add a comment. So when that hazard is not actually listed in the checklist, the comment section, you can add any other hazard that you think will be identified in your inspections. That's what I'm trying to understand. Yes, definitely. You are right. Your point is valid. We can we must have the section empty section there to and note the points that miss in the checklist. Yes, you are right. I agree. Anyone else? Thank you. Thank you for your joining. Take care. Allah Hafiz.